base pair. What will be the molecular weight of this particular DNA molecule? So into 16. You can find out. And if suppose this particular DNA is going to form a protein, what will be the molecular weight of the protein? So 110 into 100 into 10 into? 110 into the number of amino acids. No, if this particular DNA is going to form the protein, so what should be the molecular weight of the protein? Yeah, if a particular protein of this, suppose 66,000 molecular weight, kilo Dalton, if going to synthesize by a particular DNA molecule, so what should be the length of the DNA molecule? Because in the examinations you will get this kind of a question. You probable questions होते हैं इस तरह के द्वारा पूछे जाते हैं. This kind of the ये information है या मैं डिस्कस करूँ? देखो मैं कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ rather than completely जो मैं डिस्कस करूँ. और you will find out the complementation test, कितने complementation ग्रुप हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, या किसी पर्टिकुलर जो है डेटा को देख करके कैसे फाइंड आउट करोगे कि दिस इज द रिवर्सन और ये रिवर्सन जो है पॉइंट म्यूटेशन के कारण हो रहा है या जो है प्रिंसिपल म्यूटेशन का ये सब इन्फॉर्मेशन, या एक मेटाबॉलिक पाथवे है उस मेटाबॉलिक पाथवे में कितने जीन्स इन्वॉल्व हैं और वो जीन किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन्वॉल्व है, इन इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर देता हूँ ताकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है. फर्स्ट सी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, the number of base pair in the case of the DNA. A double stranded DNA molecule. A double stranded DNA molecule of 6,60,000 Dalton. 6,60,000 Dalton का एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ना प्रोवाइडेड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इस पर्टिकुलर डीएनए से इस पर्टिकुलर डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स. इसे फाइंड आउट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज गिवन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज गिवन. दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास. And there is a difference in the term molecular mass and molecular weight. If suppose अगर मैं यहाँ मेंशन करता molecular weight तो मैं यूनिट नहीं डालता, मैं लिखता 6,60,000, that is the molecular weight. If I am going to mention the molecular mass तो लिखेंगे 6,60,000 डालता. तो if you are using the unit then mass, if you are not using the unit then molecular weight. So this is the 6,60,000 Dalton, this is the molecular mass. Now question arises, what is the number of the approximate number of the base pair in this particular double stranded DNA? In the case of the nucleic acid, one nucleotide having the average molecular mass is equal to 325 Dalton. This is the average molecular of the one nucleotide. But when we are talking about the base pair, it means it includes the two nucleotides. So if you will take the case of the one base pair, in that particular condition, average molecular mass becomes at 650 Dalton. So in this case, 650 Dalton. Now suppose this has this much value. We can find out the number of base pairs. It is the total molecular mass that is mentioned. The total molecular mass in this particular condition is 6,50,000. And what is the mass of the one base pair? The mass of the one base pair is the 650. So you just divide with the 650 and we can find out the total number of base pair present in this particular DNA molecule. So we can say the total 1,000 base pair present in this particular DNA molecule. Now, if suppose I have to find the length of this particular DNA, what should be the length of the DNA? इसका लेंथ कितना होगा? देखो लेंथ हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब डीएनए का नेचर मेंशन हो. इट इज नॉट मेंशन कि जो मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया हूँ, इट इज अ बी फॉर्म ऑफ डीएनए या इट इज ए फॉर्म ऑफ डीएनए
it is a C form DNA, it is a D form DNA, it is a Z form DNA, it is not mentioned. Now suppose अगर मान लो कि mention नहीं है, तो by default हम लोग मान लेते हैं कि this is the B form DNA. Because at our physiological condition जो most commonly जो form DNA का present होते हैं, that is the B form DNA. Otherwise, questions में जो है normally ये mention होता है कि what kind of the DNA you are considering. Now suppose this is the B form of double stranded DNA. The B form of the double stranded DNA. So we know the distance between the two base pair in the case of the B form DNA, that is the 3.4 angstrom, and we know the total number of the base pair here is 1000. So if the total number of base pair is 1000, so we can multiply with the 3.4. It gives you the length of this particular double stranded B formated DNA. So you can find out the number of base pair. You can find out the length of the DNA molecule in this particular way. ये बात तो clear है?